So we will continue. 2-3 slides were left. The prehistoric, it's a prehistoric time. Let's say many evidence they are coming in the peninsular part. Why there is lack of prehistorical evidence in the Himalayan region, or let's say in the northern part of India? Anyone? Because prehistoric that is also the Paleolithic to Iron Age जोटा ଆମେ କାଲି ଦେଖୁଥିଲେ. The prehistoric age starts with 2.5 million years ago to 1200 BC. So that time the climatic situation, it was different. There was what ice age, the Pleistocene was going on. As the Pleistocene was going on, so the ice was surface covered. It was more surface were covered under the ice. Hence there was lack of option for the human being that times, or the early human, those who that time developed, जो है ना सेमन के पाखरे ऑप्शन बहुत ही कम थिला. So that is why they had to live in the tropical region, है ना. So Paleolithic हम देखा 2 million to 10,000 BC, Mesolithic 10,000 to 8,000 BC, Neolithic, that is the new age, 8,000 to 400, then Chalcolithic, okay, 4 to 1500, then as per more Iron Age. Next comes here Iron Age. बस टाइम स्केल को टिके मन रखी देथो so that easy हेबो. स्टोन एज हम देखिथिले जोटा कि that was first जदि हम कहबा तो आर्कियोलॉजिस्ट जे कि डिस्कवर करथिले पायोलिथिक टूल इन इंडिया, that is the Palavaram जोटा में डिस्कस करथिले Palavaram, and that was also the hand axe, if you remember. कोडे गला फर्स्ट डिस्कवर करथिले है ना, मने पड़छि. So I was talking about the hand axe, that was geologist इंडिया रे डिस्कस करथिले जे रॉबर्ट ब्रूस. The Stone Age हमें देखिए जो Paleolithic बा Old Stones, Stone Age, Mesolithic, Late Stone Age, and Neolithic, New Stone Age. Paleolithic रे हमें देखिए Paleo, that means the old age. Paleo meaning तो हम old age दा को discover करा जाई थला. Basically से मने जो देखते हमें जो Paleolithic culture इंडिया रे थला, that was the deep forest region रे हमको साधारणतः देखा जाए. And जो तांकर जो देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हंटर एंड गैदरर्स थे. दे वर हंटर एंड गैदरर्स. साधारणतः निग्रोटो पीपल थे जहाँ निग्रोट कहुचे. वाइल्ड फूड्स खाऊले, वेजिटेबल्स खाऊले, फूड गैदरर थे. दे वर नॉट कम्युनिटी लिविंग से कौन जानने थे. देयर वाज नो विलेज ना, नो पॉटरी, नो नॉलेज ऑफ हाउसेस, नो पॉटरी, नो एग्रीकल्चर. दिस वर नॉट देयर इन द हमर जो पैलेलिथिक एज रे है ना. ये सब नथिला. धीरे 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 ग्रेजुअली से माने कोन करथले ना, दे यूज्ड ऑन पॉलिश्ड जो कि रफ स्टोन हम देखो जंती हैंड एक्स, चॉपर्स, ब्लेड्स, स्कैपर्स, दे यूज्ड एज द वेपन. ये सब यूज करथले कॉपी फॉर द वेपन हिसाब रे सेटा को यूज करा जाउथला. देन अपर पैलेलिथिक आसीबो, and that is the 1 lakh years. Then middle Paleolithic and upper Paleolithic age हमें देखिए, sorry, lower, middle and upper. Just a minute. First हमें lower Paleolithic देखिए को region पे देखा जो this was the region. And Bhimbetka समस्त जान छ मध्य प्रदेश रछि. Bhimbetka टा को region रछि. anyone? विंध्याचल.
एंड को मेजर सिटी अछि आक पाखरे भोपाल रायसेन डिस्ट्रिक्ट so like this the Raisen districts Bhopal to 45 kilometer why Paleolithic peoples used to live in deep forest what was the reason ସେମାନେ ହଣ୍ଟର ଗ୍ୟାଦରର୍ସ ଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ହଣ୍ଟିଂ କରିକି ଜେନେରାଲି ଆନିମଲ୍ସ ମାନେ deep ଫରେଷ୍ଟ forest or the jungle used to have the shelter and plain रे ସେମାନେ hunt କରି परिबेन difficult above plains there were हम देखा जो प्लेन रीजन रे एनिमल्स रो डेंसिटी भी एते नथला साधारणतः सेति से डीप फॉरेस्ट रे होतले आ डीप फॉरेस्ट रे कोन थाए केव वगैरह थाए रॉक थाए जो थी से रॉक कॉर्नर रे से शेल्टर नहीं परिवे they also they were also what needed the shelter from the wild animals तो भोपाल पाखरे हमें देखुतले दैट इज द रायसेन डिस्ट्रिक्ट्स नियर भोपाल विंध्याचल रीजन रे देखा जाए एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट के दिस टाइप ऑफ केव्स दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द कास्ट टोपोग्राफी और द लाइमस्टोन रीजन रे फॉर्मेशन हुए पैलेलिथिक मैन मोर देन 1 लाख इयर्स अगो मतलब देखिबा time scale रे more than what lakhs of years ago most exclusive paleolithic site of India जोटा कि हम कहबा भीमबेटका जो थरे कोन देखा छै it was excavated by VN मिश्रा एटा इंपोर्टेंस मन रखो कोठी देखा जाए किए डिस्कवर करथिले अच्छा एथरे कोन अप टू मेडिएवल भी देखा जाए दैट मींस द ड्वेलिंग ता थिला एठी है से तुम अपर लोअर मिडल है जमते तुम देखी परिवो सो व्हाट वाज देयर दैट कलर कोन यूज करथले साधारण तुम देखिबे कि देखिबा जदि ग्रीन रेड ब्लैक these were the colors naturally obtained color or those colors which were naturally available they were largely used by the that is the what Paleolithic age people and images like the what it depicted that means some images are there and brush जो हमर ब्रशेस गुडा रहथिला ब्रश गुडा फाइबर ऑफ द प्लांट रे तयारी होथिला कलर्स कोठु आणुथिले जेमति कोल रो में ब्लैक आणुथिले let's say they had to draw with the red color and the red color will be that will be collected from the either iron ore or the red soil ru ani परिवे से माने आ लीव्स रु कोन आसे लीव्स रु ग्रीन कलर नै आसे है ना कोल रु ब्लैक कलर नै आसे तेमती कलर सब से माने एक्सट्रैक्ट करूथिले दैट मींस नेचुरल कलर हम कहबा सब ऑर्गेनिक कलर जोडा की यूज करूथिले एंड दे यूज्ड टू डिपिक्ट द डिफरेंट सीन्स मतलब काली जमदी कहउथिले कि ह्यूमन तार आखपाख सर्कमस्टांसेस रे जहा को देखे ताकू ही से ड्रॉ करिया पे चेष्टा करबे इट्स नॉट लाइक दैट के डॉक्टर स्ट्रेंज भलिया एते किछि भाबी परिबनी से है ना बुझि पछनी तो ऑब्वियसली एमन को एते ब्रेन डेवलप ही नथला सो दे यूज्ड टू व्हाट depicted the elephant tigers lion bison rhino है ना bear these were obviously इस वो hunting that's वो Bhimbetka shelters include the world heritage list already हमें काली भी देखी थले UNESCO heritage site एटा गोटे है ना that means ये carving and painting both देखा जाए एठी तन समान को so painting you can see the painting these are the paintings of Bhimbetka है ना and like this is the hunting scene तुम देखी परिवो how they are collectively hunting the hunting scene एठी देखी परिवो they are having some instrument like this in their hands instruments सब रही छी है ना राइड करके हॉर्स ऊपर राइड करूचंती बा किछि एनिमल्स ऊपर राइड करके जाउचंती है ना एंड हंटिंग दे वर व्हाट हंटिंग टुगेदर राइड तो हम कहबानी मतलब हंट करिवर एमती कहबन कि राइडिंग सीन देखा जाउची मतलब राइडिंग सीन नो दे वर हंटिंग बस सेती हम कहबा एमती ना कि डोमेस्टिकेट करूथले हॉर्स को दैट टाइम डोमेस्टिकेशन वाज नॉट देयर लैटर ऑन डोमेस्टिकेशन विल स्टार्ट सो हंटिंग सीन्स वगैरह हमको देखा जाय थ्रू द मिडिल पैलेलिथिक एज रे हम देखबा मिडिल पैलेलिथिक एज पर डिस्ट्रीब्यूशन हम देखि देथिले नाउ लोक मानकर टिके कोन जो इमर्जेंस ऑफ होमो सैपियन एबे आउट की पॉलिश्ड अनपॉलिश्ड थिला टूल्स गुडा बे न्यू टूल्स आसीबो like the lots of bone tools including the needles
हार्पुन पैरेलल साइड ब्लेड्स कहले बोथ साइड रे ए सब हमको देखा जिवो बाकी तो जानि छ ओडिसा रे वगैरह देखा ओडिसा रे को रीजन रे देखा जिवो लेट्स से इफ यू आस्क द अपर पैलेलिथिक को रीजन रे देखा जिवो हमर वेस्टर्न ओडिसा रे देखा जिवो कलाहांडी कोरापुट ए सब रीजन रे देखो बहुत सारा केप अछि देन एसो मेसोलिथिक जो मिडिल स्टोरेज हम कहबा है तो एथरे कोन देखा जिवो ऑब्वियसली हम कहबा टेंपरेचर टिके बढ़ी जिवो ग्लोबल टेंपरेचर बढ़ुथिला as the temperature was increasing in the holocene period किछि दरकार नहीं एको जदि न मन रखुछ डोंट वरी later on the temperature increased because of the global warming the climate change होथिला ता द्वारा कोन होची नाउ वार्म रीजन किछि रीजन हम कहबा जो शेल्टर एरिया गुडा धीरे धीरे द अपॉर्चुनिटी और द पॉसिबिलिटी of living the areas that was increasing आगे खाली ट्रॉपिक रीजन नाउ दैट मींस एबी धीरे धीरे हम देखबा एरिया बढ़ी बढ़ी जाउथला और that was the favorable condition main characteristics कोन थला ने they used to they हम देखबा मिडिल बा मेसोलिथिक एज रे they started to domesticate the animals ये होची इंपोर्टेंस आरो डोमेस्टिकेट करिया स्टार्ट करले है ना बस एतिक तुमको मन अछि डोमेस्टिकेट करथले एंड बरीड करूथले जेतेबेले लेट्स से व्हेन समवन डाइड दे यूज्ड टू बरीड विथ द फूड आइटम्स एंड अदर गुड्स तास हाउ ताको बरीड करथले burification were done like this now in mesolithic men started to wear the clothes made of what animals द्वारा से माने कोन करले ना जोटा कि हम के अर्ली ड्रेसेस देन हम इंपोर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स तो सेथरे किछि जानिया दरकार नहीं सब जगह देखा जो ऑलमोस्ट ओडिसा रे तमर संबलपुर एठी लिखा है देखो संबलपुर रीजन रे देखा जो सुंदरगढ़ हे गेला संबलपुर हे गेला that's for neolithic new stone age now what will happens एबे धीरे धीरे they would be now the producer hunter gatherer to कोन हे जबे माने gradually they will try to settle down in a hard form or in a group form धीरे धीरे रही कि कोन करबे 400 करे पिन जंत कि प्रोड्यूसर हम देखिबा फ्रॉम द फूड गैदरर टू एबी कोन हेले नाउ दे टर्न्स इनटू द प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूसर मतलब हम कहबा कि दैट मींस दे परमानेंट हम कहबा बा सेमी परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट करबो एबे जदि परमानेंट पूरा नो सेमी परमानेंट सेटलमेंट विल स्टार्ट so when polished what tool use karibe now the tool would out ge polished heitho and that would be sharper heitho and small size heitho then the pottery use kale agricultures were done like here you can see the like corn and fruits we use koruthile pottery use koruthile that is the co color sadhanto black and red adhika use kara jaye jodi kiछि भी न मन पडुची red and black or gray जाई परिबो तमे पॉलिश्ड लिखिबनी कि पॉलिश्ड पूरा लिखिबनी पॉटरीज वर नॉट पॉलिश्ड सिंपल हमको कलर जानि परबो अब नेचुरल कलर ऑब्वियसली द ब्लैक कलर तो रहिबो देन सेटल लाइफ थला हाउसेस एंड सेटल सो दे वर टेंपरेरी सेटलमेंट थला एमते नै कि द ऑल ऑफ ए सडनली स्टार्टेड टू लिव इन ए कम्युनिटी बेस्ड लिविंग जाको कहवानी तो धीरे धीरे से माने कोन करथले सेटलमेंट करिया पिन चेष्टा करथले जदियो दैट वाज नॉट परमानेंट सेटलमेंट वैली माने करे रिवर वैलीज माने करे सेटलमेंट स्टार्ट कले जो फर्टाइल प्लेन्स रे कारण एग्रीकल्चर को उठी हबो फर्टाइल प्लेन्स रे सो इंडस सिविलाइजेशन जदि हम देखिबा दैट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन द वेरी फर्टाइल सॉइल ऑफ द इंडस रीजन ओके सो लेटर ऑन सेटा डेजर्ट रे कन्वर्ट हो जाईची है ना बहुत सारा रीजन गुडा जेमती हमर लेट्स से हम हरप्पा कहूचे ए सब कोन फर्टाइल रीजन रे अछि एबे भी हम देखिबा तार लोकेशन तणु करी एमनी रिवर वैलीज रे रोया पिन चेष्टा करले सो दैट वुड बी ए फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चर आउ जो डोमेस्टिकेशन ऑफ सीड गोट्स दे विल आल्सो गेट द फूड एंड फोडर तांको मिल जबो सेति में से माने काउ कहले कॉलोनाइज करिया को लागिले कोठी वैलीज मान करे रोया पिन स्टार्ट करले इंपोर्टेंट नियोलिथिक साइट्स जमती कि हमर एठी देखो के लाइन जोटा कल्डिवा देन तमर मेहरगढ़ बुर्जवाम देन गफराल चिरांद so this like Belan Valley Narmada these are the some sites there then Chalcolithic so here we were there the Chalcolithic time re hame dekhiba that is the what stone copper age so here we had to start stone and copper age
So that is also known as the Chalcolithic, mark the emergence of the metal along the stone stool. Now this is the importance kono now metal ro use karagala for the first time. So को प्रकार that is the copper. First metal ଆମେ use कले कोन copper सेई टाइम रे देखा जो first metal to be use the copper कारण ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा पचारछि Chalcolithic because जेतरो metal use होवा start करो they will have more different kind of weapons, different kind of tools that will help or that will ease the living style of that particular people. The Chalcolithic age largely applied to the pre-Harappan phase. Pre-Harappan phase, but many parts of the country it appears after the end of Bronze বা Harappan culture. সাধারণত কুহা যায় कि Chalcolithic age is before the Harappan culture, but the point is that many parts of the country it appears the end of the Bronze Age. हड़प्पा परे साधारणतः हमको देखा जाए country साधारणतः other parts of the country. Characteristics कौन people who are living in stone copper age, domesticated animals and cultivated food grain. बस ये होची most important. तो they now started to cultivate together. That means हमें माने community हिसाब रे रहिबा start कले. कहबे हम कहबे एबे कम्युनिटी हिसाब रे रहिबे दैट मींस विलेजेस वगैरह में कहि परबा कोन ना विलेजेस फॉर्म होबो जेतोले लोक माने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट होबो एबे कोन होबो परमानेंट रहिबे ऑब्वियसली जेतोले एग्रीकल्चर करूचंती डोमेस्टिकेटेड ऑफ दिस पर्टिकुलर्स बफालोस हे जो है ना हंट करूथले डियर मन को तो जेतोले से डोमेस्टिकेट करूचे एग्रीकल्चर करूची ऑब्वियसली दे विल डू व्हाट परमानेंट सेटलमेंट. People ate beef. These were not necessary. है ना? The people of Chalcolithic phase produced wheat, rice, and bajra. So these were the food grain कथा में मन रखी परिवा. Apart from that, black green grams. These were ये भी ताको कराउथला cotton कराउथला है ना जमती कि हमारे डेकान सॉल्ट रागी बाजरा. These were cultivated rice, fish. हमें कहवा ये सब dietary practices हमें देखी परिवा. That means they started pottery. मु जोड़ा कहतली red and black. Obviously it a natural color. तेणु pottery करवा start कले काहेकि कारण जो चाष करेबे से माने ताको रखिया पे हमको कोन दरकार container that pottery will act as the container. Either they will use for the container, they will use for the decoration of the houses है ना ये सब से माने यूज करि परिबे. तमे देखबा कलर्ड पॉटरी सबू एबे आसीगला. तो बेसिकली हम देखिबा रेड एंड ब्लैक पॉटरी कोटा जदि हम देखिबा दैट इज ऑक्रे कलर जाको हम कहछे साधारणतः अधिक देखे तो व्हील भी देखा जो व्हील ना तो पॉटरीज wheel was used painting with a white liner design. White color साधारणतः कम यूज करूथले बेसिकली ब्लैक और रेड कलर अधिक यूज करथले पॉटरी कला बेले. पॉटरी रे वाटर भी रखुथले ग्रेन रखुथले देन मैरी मेकिंग पर्पस रे यूज करा जाउथला पॉटरी को डिजाइन फेयर एंड फेस्टिवल. इफ लेट्स से I would not say that there were no festival or we might not have evidence about not thaipare. That does not mean they were not doing any kind of fun or merrymaking. The settlement, rural settlement thila, obviously that would be the rural settlement है ना देखा जिवो जो that means village आमे कहबा तो village settlement आसी जाइथला जेतरा आमे न्यूलिथिक एज को आसी जे village आसी जाइछि ना ता पूर्व लोक माने scatteredly रहउथले है ना एबे आमे देखिबा हाउसेस गोटा thatched हाउस रहइबो obviously mud made of the mud bricks है ना तो mud bricks थिला किंतु हमरो mud bricks परे तापर जेतर इंडस वैली आसी जबो से टाइम रे जोटा कि बॉन्ट ब्रिक्स आसी जबो है ना. तो बाकी एठी लिखा है social inequalities as the chiefs lived in the rectangular houses while the commoners lived in the that is the round haunts. राउंड हाउंट्स माने मतलब जो गोलेई घर सब साधारणतः चीफ the head of the village that means the head of the villagers will remain in the center of the village. साधारणतः कौन था the head of the village जदि हम कहबा will remain in the center जार rectangular house रहिबो and बाकी समस्ते कम रहिबे. So other people those who are the common people they will live
सराउंडिंग दिस पर्टिकुलर हाउस को सराउंड करके रहिबे एंड से माने कोन कहथले गोटे क्लोज हेकि क्लोज सिस्टम रे रहउतले सो दैट नोबडी विल अटैक आ जदी अटैक करले टुगेदर दे विल डिफेंड देमसेल्फ. So their villages consist of more than 35 houses of the different sizes, circular and rectangular shape रे थिला साधारणतः चार्कोलिथिक इकोनॉमी जदि हम कहबा विलेज इकोनॉमी obviously primary sector that means जदि हम सेक्टर रे डिवाइड करबा it would be primary sector तो हम कहबा primary sector जेंति कि एग्रीकल्चर हंटिंग फिशिंग सो माइनिंग तो ये सब बेसिकली थिला है ना कारण हमर ये जो पॉटरी सब बना हबो केमती ताकू सॉइल को नहीं ही माइनिंग कला पर करिवो दैट माइट बी ए स्मॉल स्केल ऑफ माइनिंग बट माइनिंग तो दरकार कॉपर स्मिथ आसीबो जेतले कॉपर दरकार हमको तो माइनिंग न कले कॉपर केमती हो दैट मींस हम केबा जहां भी एक्टिविटीज होतला प्राइमरी एक्टिविटीज कहले कोन द एक्टिविटीज व्हिच इज रिलेटेड टू द अर्थ activities related to the earth or the nature जेंति कि माइनिंग हमें नेचर रू करूचे डायरेक्ट नेचर सहित इन्वॉल्व हमें एग्रीकल्चर करूचे डायरेक्ट कोन करूचे नेचर सहित हमें एंगेज्ड फिशिंग करूचे डायरेक्ट नेचर सहित एंगेज्ड तो सही सब केस को कहा जाए प्राइमरी एक्टिविटीज तो प्राइमरी एक्टिविटीज लेट्स से जणे धरी आनी के माछ देला माछ को हमें फैक्ट्री रे ताको प्रोसेस करले दिस इज सेकेंडरी एक्टिविटीज तो सेटा सेकेंडरी एक्टिविटीज रे पळे जिवो तो सेटा प्रोसेस यूनिट रे पळे गेला है ना जब भी हो तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज अधिक होतला वर्शिप यू कैन सी सो a small clay images of the earth goddesses have been found from the Chalcolithic age तो साधारणतः मदर अर्थ को हमें के बा गॉडेस को पूजा करा जाउथला इन द मालवा रीजन राजस्थान स्टाइल इज बुल टेराकोटा माने बुझा पड़छ टेराकोटा को जोटा हमर साधारणतः माने माटी रे किछि गोटे जिंस को बनैबा को टेराकोटा को आछे सो द बुल सर्व्ड एज अ रिलीजन कल्चर बुल गोटे रिलीजन कल्चर अनुसार कहला काउ भी रहिबो तुम सेथरे कहबा कि डोमेस्टिकेशन जेथरो करूथले दैट मींस द ऑब्वियसली द काउस will perform one of the important roles है ना important role perform करियो काउ then infant mortality ये तो छाड़ा एगुडा तो पढ़ी किछि दरकार नहीं ये तो obviously हाई रहबो डोंट वरी सेथरे है ना हाई mortality रहिबो ज्वेलरी कोन कोन यूज करूथले ज्वेलरी यू कैन सी द सेमी प्रेशियस स्टोन सच एज व्हाट हम जेंति स्टीएटाइट यूज करा जायछि बा कार्नेलियन क्वास्ट यूज करूथले क्वास्ट तमे जदि केबे देखि थबो क्वास्ट वो पूरा क्रिस्टलाइन फॉर्म रे थाई क्वास्ट गुडा एक्चुअली सैंड गुडा जेतरा क्रिस्टलाइन हे छै ताको कहा जाय क्वास्ट सैंड पर क्वास्ट तो क्वास्ट वो देखा जाय स्टीएटाइट कहले कोन ना ये गोटे स्टोन टाइटा ये कोठु मिले रिवर बेड रे लेट्स से एमती रिवर फ्लो करूची तो रिवर बेड रे जो सॉफ्ट स्टोन गुडा मिले सॉफ्ट स्टोन ताको कहा जाय स्टीएटाइट है ना स्टीएटाइट कहले कोन रिवर बेड रे जो सॉफ्ट स्टोन मिले क्वास्ट मु कहले कि सैंड और क्रिस्टलाइन फॉर्म को क्वास्ट कहा जाय साधारणतः ये नॉर्थ ईस्ट बहुत मिलु छु क्वास्ट नॉर्थ ईस्ट भी और क्वास्ट हो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल्स ऑफ द अर्थ रो जो क्रस्ट अछि सेथरे क्वास्ट बहुत मिले ना इंपोर्टेंट चाल्कोलिथिक साइट हम देखबा दैट इज आहार बानस वैली हमर जो बानस रिवर अछि बानस रिवर कार ट्रिब्यूटरी एनीवन चंबल है ना सो दैट इज द व्हाट गिलुंड देन डाइमाबाद मालवा रीजन दिस आर द रीजन हमको नर्मदा चंबल रीजन साधारणतः रिवर साइड रे रहइबो ना सेति में वैली लिखाइ छी ये भी तमरो वैली हियर इज आल्सो वैली तो वैली रीजन रे रहइबो एथि पई कारण मु तुमको कहथि एग्रीकल्चर पई ताको दरकार फर्टाइल लैंड so that is why now the but when they started to live in a village or the permanent settlement kare jitro lokone start kale initially obviously they will look for the what or they were looking for the plain region valley region where the fertile land will be there and with the availability of water as well so that valley region को सेमने पळे आसीबे धीरे धीरे हमको रिवर साइड को आसीबा चेष्टा करियो जेंति गोदावरी रिवर हे जो कि तुमरो बानस रिवर हे जो और लेट्स से अदर रिवर्स आसी जो कौन माने साधारणतः राइस भी कल्टिवेट तो करिवे ही करिवे तो ये सब आसी जो तुमको आउ किछि रीजन भी आई छै जेमथि सोनगांव नाभाटोली नेभासा चिरांद सनुआर सोनपुर
Bihar, then Mahisdal, West Bengal, Kayatha, Madhya Pradesh, Chambal river. तो सब रिवर साइड आसीज तार ट्रिब्यूटरीज मान साइड रे आसीज कारण जोटा आम कहले कि एग्रीकल्चर कर देन आसो आम आयरन एज द आयरन एज आम क्या कहे इन दिस टाइम आर्यंस अराइव्ड एंड द वैदिक पीरियड वाज स्टार्टेड किए आसते आर्यंस आर्यंस माने कोठू आसीथिले कोन सेटा तो आम देखिबा इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़िला बेले तापरे कोन थिला महाजनपद वेर रेज्ड इन दैट पीरियड महाजनपद है ना महाजनपद कहले बड़ बड़ आम कहबा कौन दैट इज द व्हाट किंगडम लेट्स द किंगडम लार्ज किंगडम्स है ना सो जब कहते कि 12 केते महाजनपद थिला हाउ मेनी 16 महाजनपदस were there तो कहले बड़ बड़ गोटे गोटे राज्य मतलब दैट टाइम इट वाज लुकिंग लाइक ए है ना बड़ बड़ गोटे गोटे सेटलमेंट थिला तो सही समय हम देखा जीवो कि आर्यंस माने जोटे कि सेंट्रल एशिया रो आस्तला बिलीव करा जे कि सेंट्रल एशिया जो हमर ब्लैक सी अछि कैस्पियन सी सही रीजन रो बा स्टेपी रीजन रो आस्तला बोली बिलीव करा जाय कि आर्यन माने स्टेपी रीजन रो आस्तले जो स्टेपी ग्रासलैंड अछि सेठु आसी पहुंचथिले स्टेपी ग्रासलैंड रो आसी पहुंचथिले आउ जदि हम देखो से पर्टिकुलर टाइम रे आसिक रहिले तापतरा कोन होला महाजनपदस आसिला 16 महाजनपदस ता थ्रू इमर्ज करियो दी तीनटा स्ट्रांग है ना जेमति तमरो कोन and the most strongest who was the winner of the 16 महाजनपद मगध सेटा कोन थिला मगध हां तो मगध रहइबो तमरो द विनर और द लीडर ऑफ दिस महाजनपद तांको भीतर कॉन्फ्लिक्ट चलिबो एंड फाइनली मगध इमर्ज करिवो जोडी तमरो कि आसीबो जेंति चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन डायनेस्टी इमर्ज करिवो बुझोछन द मौर्यन डायनेस्टी विल रूल द मगध को रूल करिवो तो मगध फ्रॉम डिफरेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट किंगडम आछंती और तको रूल करिसंती तो महाजनपद हमको देखा जिवो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड देखा जिवो है ना कोथरे फर्स्ट टाइम मेजर सिविलाइजेशन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा तापर इंडस वैली सिविलाइजेशन को आसमान देखिबा हम तो जहाँ भी हो तो आयरन एज समझिवा the first iron period in the history to show the clear evidence of the social and political hierarchies as well as the true government. The upper Ganga valley and its peripheries, Malwa plateau, Tapti, south and central megalithic areas, आकु भी हमें पढ़िबा बालूचिस्तान सेटा दरकार नहीं बालूचिस्तान पढ़िबा हमें Now we will go through the Harappan civilization. Next, we will go through the Harappan civilization. एथरू मैक्सिमम क्वेश्चन आसुची हरप्पन सिविलाइजेशन रो गोटे क्वेश्चन आसबा कथा ही आसुची कारण जेहेतु इंपोर्टेंस डिस्कवरी थिला एंड वन ऑफ द प्री हिस्टोरिक टाइम रो हम देखबा बा जो हिस्ट्री एविडेंस अछि तो सेठु हमको देखा जो कि वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड दुनिया रे चारिटा सब मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन गोटेला तमरो हरप्पा गोटेला मेसोपोटामा गोटेला चाइनीज सिविलाइजेशन आ गोटे रो तमरो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है ना तो ये मान को कहा जाए 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन और आंका भितर सब ओल्डेस्ट होची हरप्पा है ना एंड जोड़ा मेसोपोटामिया दैट यूज्ड टू बी द कंटेम्पोरारी ऑफ हरप्पा बट इजिप्ट सिविलाइजेशन को कहा जाए लेटर ऑन सेटा आसला सो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस फ्रॉम हियर बर्थ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन also known as the Harappan civilization कहा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन that means हमें कहे इंडस रिवर रो आख पाखरे डेवलप होइतला सिविलाइजेशन काहे की कहा जाउची सिविलाइजेशन कहले ह्यूमन सिविलाइज्ड हो जाइतला ह्यूमन स्टार्टेड टू लिव टुगेदर बुझि परछो तो ए माने एबे एकाठी रहया पे चेष्टा कले दे वर मोर सिविलाइज्ड दे वर नॉट हंटर एंड गैदरर्स दे वर कॉलोनाइज्ड से माने कॉलोनी करी के रहले दे वर मोर सोशली बिहेव्ड पीपल दे डेवलप्ड लाइक ए प्योर ह्यूमन बीइंग तो हम सेट पे को सिविलाइजेशन कहबा कि दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट दे स्टार्टेड टू लिव इन मतलब सोशल रिलेशन से उनको मतलब बहुत बोलतला सो आज हमें आगो कहबा तो अर्बन जाको तुम कहबा इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट प्रोटो हिस्ट्री द पार्ट ऑफ द प्रोटो हिस्ट्री
was the first urban civilization Southeast Asia, sorry South Asia रे पूरा मु कहबी first हमें देखिबा जोटा कि अर्बन सिविलाइजेशन बोली कहा जाए तापरे बाकी हम देखिबा अदर सिविलाइजेशन जबती हमरो रहिछि तमरो कोन लाइक तमिल सिविलाइजेशन हमें देखिबा सेटा आगो देबा आको कहा जाए क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाए ना हरप्पन सिविलाइजेशन को भी कहा जाए क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन जा भी हो हरप्पन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जोटा मु तुमको कहउथली है ना आल्सो कॉल्ड एज द सुमेरियन आको सुमेरियन कहती इजिप्टियंस मु आउ तुमको कहथली चाइनीज ये सब देख मु तुमको कहथली दीज आर द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हां किंतु ध्यान से मन आंक भीतर सब ओल्डेस्ट होची इंडस इंडस रो कंटेम्पोरेरी होची सुमेरियन बा हम जाको कहउचे मेसोपोटामियंस चाइनीज सिविलाइजेशन इज प्रीटी न्यू माने तांको भीतर न्यू थिला तो एमन को कहा जे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन तेणु बर्तमान टाइम रे तुम देखिबा इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया एंड पाकिस्तान रे आसुची मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जोटा तुमरो से भी रिवर वैली रहितला आ सबुठु इंपोर्टेंट जिंस कोन जिंस कि नहीं ए चारिटा जक सिविलाइजेशन सब रिवर साइड रे ही डेवलप हेतिला फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द रिवर बैंक ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मेसोपोटामिया टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिक्स सुनिथिबो एंड यूफ्रेटिक्स बुझि बचन टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिक्स देन इजिप्टियन तो जानी छ को रिवर नाइल रिवर है ना एंड चाइनीज सिविलाइजेशन को रिवर चाइनीज सिविलाइजेशन यांगजे रिवर सो ये मन को कहे तेणु दुनिया रे जे चारिटा सबटु ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन होची ए ओके तो फ्लोरिस्ट हेतला केते हम देखबा 2500 BC वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया हमें देखबा इन कंटेम्पोरेरी पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया इंडस वैली न वैली रे काहे कि रहला कारण हमर जतले नियोलिथिक टाइम को आसले तो धीरे धीरे लोक माने सिविलाइज हेतले इंडस वैली सिविलाइजेशन बिगन्स किछि लोक दिस इज देखो ये सब्जेक्ट टू डिबेट कि कांति इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 ने कि 10000 मतलब कहा जाए कि इट वुड बी 1200 और लेट्स से द 1000 बुझ बचने सॉरी 1000 है ना 1200 के की कांति 1200 के की कांति 1000 के की कांति 35 टू नहीं की 15 सो दैट वुड बी टाइम स्केल साधारण तो कहते कि 1500 बेलू खत्म हो जाता सिविलाइजेशन एमती बहुत सारा था अच्छे जहाँ भी से चलो से किसी नहीं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बिगान्स अराउंड 3300 को बुक रे देखिए लिखा है तो 3500 BC भी लिखा था ना बाय 1500 बेलू खत्म हो गला बोली कहा जाए कारण आर्यन माने आसी जो जहाँ भी हो सो मिडिल पार्ट हम देखिबा ये देखिबा तुम्हारा मिडिल पार्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन है ना डिक्लाइन के स्टार्ट हैला डिक्लाइन कला देखो लेट्स से डिक्लाइन तुम मन रखबनी तुम गोटे सिंपल मन करो कि 3500 बेलू स्टार्ट हैला देन आम कहबा सिविलाइजेशन मैच्योर हेगला बाय 2500 बेलू मैच्योर हेगला एंड डिक्लाइन कला केते ना बाय 2000 को डिक्लाइन कला आ डेथ के सिविलाइजेशन खत्म हेगला केबे ना 1500 रे खत्म हेगला सो तमे नंबर को इजीली मन रखि परिबा है ना से 19 25 26 किसी दरकार नहीं 35 कर दो सो 35 स्टार्ट हैला 25 मैच्योर हो गला 20 डिक्लाइन स्टार्ट हो गला एंड 15 है जो तुम्हारा खत्म बाय 1000 ऑलमोस्ट खत्म है ना तो ये हमारा खत्म इंडस वैली सिविलाइजेशन तो सब जदि हम देखबा 1920 आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कैरिड द एक्सकैवेशन इन इंडस वैली wherein the ruins of the two old cities Mohenjo-daro and Harappa were unearthed. किए करथिला एटा जॉन मार्शल अंडर whom John Marshall, the general director of the Archaeological Survey India, announced the discovery of what new civilization Indus Valley to the world. तो किए जॉन मार्शल अंडर द व्हाट हम कहबा डायरेक्टर जनरल ऑफ जॉन मार्शल एटा मन रखिबो ना किए एक्सकैवेशन करथिले हम देखिबा अलेक्जेंडर कनिंगहम कथा सुनी तो हम टिके देखि तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई बुझ बरछनी जॉन मार्शल was the DG of ASI 1927, the first professional archaeologist of India. Then R.E.M. Wheeler was the director of ASI. He followed the what that is the stratigraphy of mount जो mount गुड़ा नहीं कि मैंने ढीप ढीप थिला एक्चुअली कौन हैला कि जेतेबे हमरो काहे कि ना वाइ सडनली हमें देखिबा 1922 1923 रे डिस्कवर करा गला कारण ता पूर्वरु जो वार सब होतला ब्रिटिश टाइम रे
किसी सोल्जर दे स्पॉटेड आउट सम माउंट एमती माउंट मानकु करे ढीप ढीप गुड़ा को स्पॉट कले तो से ताकू बहुत दिन तक से माने नजर अंदाज करिसेंती बट फाइनली दे स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड के लाइक ये सब कौन एग्जैक्टली तो से देन आसबो तुमरो दाराम सानी द फर्स्ट appointed director general of ASI then मतलब हम के भाई कौन इंडियन बुझ पड़छ नहीं then Harappa site was discovered by that is the Dharam Sani है ना को डिस्ट्रिक्ट्स रे that is the Monte that what Gometri districts of Punjab Pakistan. Mohenjo-daro was discovered by Banerjee R.D. Banerjee. So it among the that is the Larkana district Sindh Pakistan. तो मोहेंजोदारो किए करथिले दैट मींस हराप्पा आमे के दारम सानी एंड मोहेंजोदारो होची बनारसी आरटी बनारसी सो एटा टिके पछारे तनो को प्रिलिम पे मन रखियो देइटा अलेक्जेंडर कनिंघम कथा पछारे कारण ए फास्ट थिले जन मार्शल ए तांको टाइम रे थिले दैट मींस हना ये भी तमरो ब्रिटिशर्स थिले तो इंडिया रे फास्ट होची दारम सानी एंड ए क्वेश्चन में मन को सो this one and Harappa site discovered by Sani Banerjee discovered kole Mohenjo-daro feature of Indus Valley civilization आगे मैप टिके हम देखि तो इंडस वैली सिविलाइजेशन रो so this region हम देखियो Indus Valley civilization developed in this particular region a region रे Indus Valley because Indus river is moving like this तेणु ए रीजन रे हमर इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप करथिला The first urban culture in India is the Indus Valley civilization. Large part of the civilization grew on the bank of the Ghaggar river, Ghaggar, Indus and its tributaries. Now Ghaggar kar tributary? Anyone? गंगा Yamuna tributary. Seta Ghagra, eta Ghaggar. Bangar chota seta Ghagra. बुझ पड़छ एटा घागर जोटा कि यमुना रे ट्रिब्यूटरी बुझ पड़छ तो civilization also known as the different purpose for the building of cities ये civilization कौन पे जाना जाए for its sanitation for its town planning for its buildings for its road for its drainage system ये सब पे ये city जाना जाए this city is known for what the known for drainage pattern road sanitation town planning then what the buildings ये सब पे सिटी जाना चाहिए डबल स्टोरेड बिल्डिंग भी थिला एंड हाउसेस वेयर देयर है ना कंस्ट्रक्टेड विथ डिफरेंट फैसिलिटीज थिला जेमते कि हियर कोन से द बाथरूम किचन अदर फैसिलिटीज थिला असेंबली हॉल थिला ग्रेनरीज थिला ग्रेट बाथ थिला बिल्डिंग्स एंड वाल्ड सिटीज थिला ये भी देखो वाल्ड सिटीज दैट मींस दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ लाइक हम कहबो जेमते पूरी जगन्नाथ टेंपल रे देखबो कि जो मेघनाथ प्राचीर अछि है ना सेटा जो पाचीरटा रही सेटा कोन पे टू प्रोटेक्ट द टेंपल फ्रॉम द इन्वेडर्स the main important occupation for the rural areas was agriculture rural area रे agriculture थिला हम देखिबा the beside the peoples were engaged in the what internal and external trade भी थिला से समय तो Indus Valley civilization बले हमर कोन थिला ट्रेड थिला pottery was one of the main occupation देखिबा कारण आकु बहुत सारा pottery बनउथिले से माने they had technical knowledge of metal and other alloying जोड़थिले जेमते कि bronze sculpture करूथिले dancing girls in Mohenjo-daro गोटे माने हमकु देखा जो गोटे एविडेंस मिली जोटे कि डांसिंग गर्ल गोटे गर्ल्स टा कोन करूची तार वेस्ट रे हाथटा रखिची अंटा रे हाथ रखिची गोटे जोटा त्रिभंगी स्टाइल जेमती हमर के माने डिफ्लेक्शन एट नी डिफ्लेक्शन एट वेस्ट एंड नेक तो सेही बेले गोटे स्टैच्यू भी देखिया को मिले ताको हमें जो तुमको शॉर्ट नोट दिया जो एथरे सब अछि पूरा शॉर्ट रोची बढ़िया से अछि डिफरेंट साइट को रिवर बैंक रे को साइट मिले कोठी कोन सब तुमको दिया जो डोंट वरी the materials were used जेमति कि हमरो देखा जबो कोन कोन यूज कराउथले हम देखो आइवरी यूज करथले फैंस यूज करथले सेल बोन आउ
साधारणतः आम ट्रेड करूले जमी लोथाल गुजरात जानी ट्रेड क्या सहित कर ओबियसली आउ मु तुमको कही कंटेम्पोरारी यार कंटेम्पोरारी किए मेसोपोटामिया तो ट्रेड क्या सहित से कर मेसोपोटामिया सहित कर आउ लैटर पार्ट से माने इजिप्टियन सिविलाइजेशन सहित करेंगे है ना बुझे ना ओरशिप करुले ओबियसली नेचर को एनिमल्स को प्लांट्स को से ओरशिप भी करुले ओरशिप करते लॉर्ड शिवा मदर गॉडेस एमान को से माने ओरशिप करते रिचुअल्स थिला स्पेल्स थिला चार्म्स थिला जमते मंत्र वगैरह पढ़ीबा ए सब थिला सील यूज करते बहुत सारा सील यूज करते सील कले एमती कौन से गोटे लेट्स से 2x2 शेप रो इंच रो थिला है ना तो ताको हमें इंचेस रो सील गुड़ा से माने तैयारी करथिले सील गुड़ा जो स्टिएटाइट रो होथिला स्टिएटाइट रो सील गुड़ा फॉर्मेशन करा जाउथिला जो सील गुड़े किछि इमेजेस थिला साधारणतः सील गुड़ा एथि पे यूज करूथिले ना आज ए ट्रेड पे सील गुड़ा ट्रेड पे जो कि बाटर सिस्टम हमें कहथिला करू तो से माने ट्रेड एक्सचेंज पे यूज करूथिले आउ तांकर जेमते कि हमें कहले कि ओरसी वगैरह पे भी सील यूज करूथिले आउ किछि जिंस को मनी रखिया पे भी से माने सील यूज करूथिले पिक्चर ऑफ द पीपल जो ट्री सीन इन मेनी सील्स है सील रे पिक्चर सब थिला प्रत्येक पिक्चर किछि ना किछि हमें कहबा गोटे डिफरेंट मीनिंग से माने प्रूफ करिया पिन चाहूतले आर्ट ऑफ स्पिनिंग वीविंग ये भी थिला स्पिनिंग एंड वीविंग कारण ये माने कॉटन कल्टीवेशन करूथिले बिकॉज ऑफ व्हाट कॉटन ये लोक माने कॉटन कल्टीवेशन करथिले ता द्वारा से माने क्लोथ्स वगैरह बनाउथिले एंड एबे भी देखो तुम्हें से रीजन रे कॉटन कल्टीवेशन होची तले हरप्पन सिविलाइजेशन में देखो दरन सामनी 1921 रे करथिले सिचुएटेड ऑन द रिवर रवि बैंक देखो ये तुमको मन रखिया पड़े पंजाब पाकिस्तान रे अछि मंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब सो हरप्पन सिविलाइजेशन दरन सामनी 1921 रवि बैंक रिवर ओके सैंडस्टोन स्टैच्यूज ऑफ दैट इज द ह्यूमन एनाटॉमी ग्रेनरीज देखा जाए आउ एठी कोन देखा जाए तुमको that is the what bullock जोटा के bullock cart देखा जब हमको then next हमें देखिबा in 1929 रे that is stukta that is what Gendar in the southern western Balochistan province of Pakistan अरे कौन कहले जो रिवर तुमरो दास्त रिवर होची से रीजन रे एठी कौन कहला साइट टा जति हम देखिबा ट्रेड पॉइंट थिला बिटवीन हरप्पा एंड बेबीलियन कहले जो हमरो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हमें कहचे बेबीलियन देन चानुदारो ये आपको किए करथिले मजुमदार जीएन मजुमदार 1931 चानुदार सिंध ऑन द बैंक ऑफ रिवर बैंक रोची जोटा कि डेड मेकर्स ऑफ फुटप्रिंट्स देखा जाए ये सब डॉग वगैरह देखा जाए मको मांजेदार आसीबो जाको माउंट ऑफ डेट्स बिल को आजे एटा पचारे छै बहुत थरो एंड आरडी बनाची रेबो 1922 रे तो ये होची सबुठ इंपोर्टेंट कोटा धरमसानी ये रेबो सेकंड इंपोर्टेंस रिवर सबले पचारची बहुत थरो को रिवर बैंक रे देखा जाए रिवर इंडस दैट इज द व्हाट लारकाना डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब पाकिस्तान रे एठी कोन देखा जाए तुमको ग्रेट बाथ से तुमको पचारियो मोहनजोदारो रे कोन देखा जाए लाइक द ग्रेट बाथ ग्रेनरी दैट इज कौन रहा हमारा डांसिंग गर्ल सील ऑफ पशुपति जो हमारा शिवा देन महादेव जोटा देन स्टिएटाइट स्टैट्यूज ऑफ द बियर्ड मैन पीस ऑफ द वुवन कॉटन ये हमको सब देखिया को मिलिबो जे एविडेंस कोन कोठु मिलिची सेटा पचारे देन आमरी रे हम कोन मिलचे देखि दो तुम मजुमदार एनजी मजुमदार करथिले ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस दैट इज एंटीलोप एविडेंस एटी देखा जबो कालीबांगा राजस्थान रो छी घाघर रिवर जो थे हमको कैमल्स रो बोन्स देखाते वुडन प्लाव फायर अल्टर्स डोर देखाते देन लोथाल गुजरात रो छी है ना गल्फ ऑफ कांबे गुजरात रो छी बाय आर राव एटा मन रखो एठी कोन देखा जे ना मैन मेड पोर्ट सबुठो इंडिया रो एंशिएंट पोर्ट एठी देखा जे डॉकयार्ड देखा जाउची राइस हॉस के देखा जे फायर अल्टर्स देखा जे एंड चेजिंग प्लेइंग कहले जमति कि कोनोसी गोटे बाघटा हरिण को कैच करने पे चेष्टा करूची तो एमती हमको चेजिंग प्लेइंग्स गुड़ा देखा मिलेगा आ जो फायर अल्टर गुड़ा सेमती किछि नै साधारणतः वर्शिप पर्पस पे यूज करा जाउथला देन एस हमर सुरको टाटा दैट इज द टाडा जेपी जोशी 1964 गुजरात रे बोन्स ऑफ हॉर्सेस एंड बियर
ये हमको देखा जो देन बनवाली कोठी अछि हिसार हरियाणा रे एठी भी देखियो हमके देखे बेड्स देखा जो sorry this beds barley evidence जो हमर को evidence of both pre harappan and harappan culture ro evidence बनवाली देखा जो धोलावीरा then बिसित RS बिसित गुजरात रन ऑफ कचरा सूची वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एटा बहुत इंपोर्टेंट वाटर रिजर्वायर धोलावीरा तो धोलावीरा हम देखा बहुत गुजरात रे आसीबो दैट मीन धोलावीरा एंड लोथाल गोटे जगह रे पोर्ट आ गोटे जगह रे रिजर्वायर धोलावीरा बस ए दुईटा टिके मन रखो इंपोर्टेंस अछि भितरे देन फेजेस आसीबो फेजेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन अर्ली फेज मैच्योर फेज एंड हमर लेट फेज रे देखिबा अर्ली फेज जोटा कि मु तुमको कहउतली ईदर यू मे लाइक रिमेंबर 3500 टू 2500 दिस कना एपटे बुझोछ ईदर लाइक दिस वन जहाँ भी मैच्योर देखी परिवा में मैच्योर अप टू दिस लाइक 25 टू नहीं कि 200,000 को आम नहीं जबा दैट पुट द मैच्योर फेज तापरे हमर आसीबा लेट फेज को आसीबा लेट फेज रे डिक्लाइन होवा स्टार्ट हे जबो so early harappan phase related to the hakra phase identified in the घाघर hakra river valley तो घाघर river valley रे हमको early phase देखा जाए ताले अर्थ कोन लेट्स से ए रोचे हमर घाघर रिवर यमुना जाउची एपटे इंडस जाउची तार भी ट्रिब्यूटरीज रहिची अर्ली फेज कोले प्रथम जो सेटलमेंट है गोटे छोटिया सेटलमेंट स्टार्ट हो धीरे धीरे सेटलमेंट विल स्प्रेड धीरे धीरे ग्रेजुअली द स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन ऑब्वियसली हम के गोटे अर्बन सिविलाइजेशन थिला माने स्प्रेड करिवो लाइक द मॉडर्न सिटी आर स्प्रेडिंग आउट तो इनिशियली गोटे सिटी रो जेमति कि लेट्स से भुवनेश्वर हम केवा ओल्ड टाउन लिंगराज टेंपल इज द स्टार्टिंग पॉइंट सेमिति से सिटी रो गोटे स्टार्टिंग पॉइंट थिला जाको हम कहै इनिशियल फेज बा अर्ली फेज कोठू घाघर रिवर स्टार्ट हेतला एंड द हाकरा रिवर वाली द अर्लीस्ट फेज इंडस स्क्रिप्ट रो जाना जाए दैट इज द 3000 BC फेज स्टैंड फॉर द कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ऑब्वियसली नाउ जो विलेज प्रथम हम देखबा जो चालकोलिथिक एज बेले एंड न्यूलिथिक एज बेले villages formation हेतला एंड villages were guarded by the village headman जने हेड तो रहिबो विलेज रो तो से हेड रु एठी भी आसी जिवा में देखा सेंट्रलाइज आको कहबा सेंट्रलाइज सिस्टम ना हियर आल्सो देयर वाज आल्सो सेंट्रलाइज सिस्टम इंक्रीजिंगली अर्बन लाइफ धीरे धीरे बढ़िला ट्रेड नेटवर्क बढ़िला एस्टैब्लिश हैला बहुत सारा तो एठी हम देखिबो तमरो जेमती क्रॉप्स जेमती पीज आसी गला सेसाम्स आसी गला डेट्स कॉटन एक्सेट्रा सो ऑन सो फोर्थ सो आसी गला है ना हमको देखे जो तापरे मैच्योर फेज को आसीबो मैच्योर फेज देखिबा ना पाकिस्तान लोथल रीजन ए सब रे हमको देन टाउन प्लानिंग तो कोन थले ये सब टू डिस्टिंग्विश करे जदी हरप्पन सिविलाइजेशन नोन फॉर इट्स टाउन प्लानिंग पे जणा दे एते पे तो जणा छै ना टाउन प्लानिंग केमते थिला सेटा देखिबा सो हरप्पन एंड मोहनजोदारो इज हैड इट्स ओन दैट इज द सिटाडेल और आमे जाको कोचे एक्रोपोलिस सिटाडेल पैटर्न रे थिला ऑक्युपाइड द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास जो सिटाडेल थिला दैट वर ऑक्युपाइड बाय द हायर सेक्शन ब्रिक्स हाउसेस थिला किछि हमर एमते नै कि ऑल ब्रिक्स ऑल वर द ब्रॉन्ट ब्रिक्स किछि हमर दैट इज द आमे केबा जेमते कि हमर लाइक क्ले ब्रिक्स आमे जाको कहि परिबा मतलब कच्चा आ थिला आ किछि ब्रॉन्ट थिला किछि किछि को से माने बंट कर देउथले आउ किछि एमिति आज यूजल कि यूज करथिले the remarkable things about the arrangement of the houses जो देम था grid system थिला the cities were grid system that means let's say एमती रोड रहला रोड साइड रे घर सब रहइबो हना तो पूरा गोटे पैटर्न रे थिला एमते नै कि हापाजर्ड घर करबा हापाजर्ड नथिला इट वाज ए प्लानिंग so that कोठी ड्रेन रहिबो को सीधा घर रहिबो पूरा ग्रिड सिस्टम थिला जेमती हमर कुछ नेटवर्क ऑफ कैनाल्स होची बा ड्रेनेज सिस्टम होची सो दैट हमर कोन रहिबो वाटर टा इजीली डिस्चार्ज हे परिबो फ्रॉम द सिटीज ग्रेनेरीज थिला ब्रिक हाउसेस थिला सम मड ब्रिक थिला किछि थिला हमर ब्रंट थिला बामे बंट जाको हम कहूचे किछि बंट रहिबो आ किछि रहिबो मड रहिबो जोने कच्चा हम कहि परिबा तो बंट ब्रिक्स हाउसेस साधारणतः अधिक थिला जोटा कि रिमार्केबल फीचर्स थिला बाकी जो अदर civilization those were there like the Mesopotamian civilization they didn't know about this particular burnt brick uses so they were साधारणतः using the
ड्राइड ब्रिक्स जहाँ को हमें कच्चा कही परिबा और जहाँ को मड ब्रिक्स बोली कहबा ड्राइड ब्रिक्स यूज करूथिले इजिप्टियंस साधारणतः आमर किंतु बॉन्ड थिला सेथे हरप्पन civilization is unique civilization from the contemporary other civilization. Chinese then didn't knew about that. So many they were not aware of the use of these burnt bricks. Mohenjo-daro सबुठु impressive थिला हमर ड्रेनेज सिस्टम आ ये कोठी थिला मोहेंजो-दारो ड्रेनेज गुडा केमति थिला गोटे लार्ज ड्रेन रहबो ताकू छोट छोट ड्रेन जोटा कि हाउस होल्ड रो आसुची आसे कि मिसिबो सो दैट हम कहबा ड्रेनेज सिस्टम टा दैट टाइम इट वाज द remarkable drainage system thila. Here you can see the grade केमति रहिछि मोहेंजो-दारो let's say ये गोटी main road है ना citadel patterns देखिबा these are the roads perpendicular रहिबो पूरा ओके आउ ये सब घर सब अलाइंड हेकि रहिछि ता द्वारा ड्रेनेज सब रोड साइड रे ड्रेनेज रहिबो एबी भी रोड साइड रे ड्रेनेज अछि हमरो देखि परिबो तो पूरा ग्रिड एमति हमको देखा जिवो ये रहबो ग्रिड हियर यू कैन सी ये रहबो घर सब रहबो अलाइंड रहबो ड्रेनेज सिस्टम रहबो साइड रे रोड साइड रे ड्रेन रहबो पूरा स्ट्रीट रे पैटर्न्स देखि परिबो जो आमे देखिबो पूरा परपेंडिकुलर सब क्रॉस करूची जको में सिटाडेल पैटर्न कहूचे रोड गुडा परपेंडिकुलर क्रॉस करिवो है ना जेमती हमर लेट्स से आचार्य विहार रोड जयदेव विहार रोड ये सब देखियो परपेंडिकुलर पैरेलल अछि एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू दिस स्मॉल आमे केबा रोड द्वारा कनेक्ट करूची लेन द्वारा कनेक्ट कराउची सो दैट हमको पैटर्न केमती देखिया मिलिबो परपेंडिकुलर हमको देखिया मिलो प्लान रीजन ता ना ती हमको एमती देखा जिवो ऑलमोस्ट सिटीज एवरी cities they were big and small houses थिला जेमते कि कोर्टयार्ड थिला बाथरूम थिला घर मानक कालीबांगा जोटा राजस्थान रो छी वेल्स भी देखाउतला सेठी है ना फोर्टिफाइड थिला ऑब्वियसली फोर्टिफाइड रहबो ना वॉल रहिबो वॉल न रहले किमते हो बिकॉज़ ऑब्वियसली ये देखा तमे है ना वॉल स्ट्रक्चर रही चारिपटे सो दैट प्रोटेक्ट करिबा हमें है ना हियर इज द रिवर इज फ्लोइंग डाउन तो ये गोटे कंपैक्ट सेटलमेंट हमें कहि परिबा ये गोटे सिटी थिला पूराटा देवाते सिटी लास्ट सेटलमेंट ये गोटे बहुत बड़ सेटलमेंट थिला जेथरा हम देखबा सिटाडेल पैटर्न्स हम देखि पले इथरे केमति सिटाडेल पैटर्न्स रही है ना ये पूरा परपेंडिकुलर टच करिवो रोड्स गोटे रोड आ गोटे को परपेंडिकुलर कैंसल करिवो एग्रीकल्चर रे कोन कोन करथले सब राइस करथले लेट्स से बार्ले करथले से माने देन व्हीट करथले राई पीस सेसाम है ना दिस वर द मस्टर्ड फार्म करी is vegetables and food grains both semane cash crop भी करथले for example the cotton होची cash crop earliest people to produce the cotton आज पंत भी cotton से सब रीजन रे होची difficult to construct the actual agricultural practices सेटा हमको जाना पड़िबो नाही जेति की होची काफी सेमी एरिड रीजन थिला ए रीजन रो अधिक यूज करथले एनिमल्स भी semane reared करथले लार्ज स्केल रे like but horse was not known है ना अब बाकी सब थिला लाइक द एलिफेंट टाइगर रिनो दे वाज देयर डॉग्स बट हॉर्स वाज नॉट नोन टू दिस पर्टिकुलर पीपल हरप्पन मन को हॉर्स विषय किसी जाना नथिला बा हॉर्स रो यूज नथिला दैट टाइम बाकी तमे बुल वगैरह कहि परबो ऑक्सन बुल हे गेला एमन भी यूज करा होतला इकोनॉमी ट्रेड रो आसीबो आउ कोथरे सो ट्रेड ऑफ लाइक मेटल सेल्स यूज करथले and they were also their primary economy हम कहबा एग्रीकल्चर एंड ट्रेड से ट्रेड कोथि करबो एंड ट्रेड टा को सिस्टम मतलब बार्टर सिस्टम रहला बार्टर सिस्टम तो समझते जानते गिव एंड टेक बार्टर सिस्टम दैट मींस देयर वाज नो मनी नथला तो बार्टर सिस्टम रे से माने एक्सचेंज करथले गुटे लेट्स से somebody is producing rice and somebody is producing cotton so they will exchange among themselves कि ये कॉटन दबो ये ताको राइस दबो एक्सचेंज ही जाउथला the navigation करूथले कोठी अरेबियन सी that used to be served as the what जदि हम के navigation पे यूज करा जाउथला trading colonies in the northern Afghanistan Tigris Euphrates rivers हमने यूज करथले हरप्पन लोक माने जाई कि सेठी ट्रेड करूथले से माने भी हरप्पा करथले तो ट्रेड होतला हियर यू कैन सी द ट्रेड सिस्टम हाउ दिस लोथल यूज हियर now lothal ro mane emti gole Mesopotamia here is the Mesopotamia and from here to the Egyptian civilization okay ये रे हमर Egyptian civilization so जदि हम देखिबा एमती प्रोटो सिविलाइजेशन ए रीजन रे भी किछि सिविलाइजेशन थिला तो एठी की भी समान कोन करथले आसुतले मतलब लैटर ऑन धीरे धीरे सेटलमेंट बढ़िबो तो
ये सब देखा जो मतलब दिस वर प्रिटी न्यू सिविलाइजेशन बट दिस वुड बी एंशिएंट एटी टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिक्स अछि हियर इज द यूफ्रेट्स हियर इज द टाइगर्स इंडस एंड हमर रहबर नाइल ई रीजन रे माने ट्रेड करथले ट्रेड रूट जोटा थिला क्राफ्ट हमें देखिबा जेमति क्राफ्ट रे दे वर यूजिंग द ब्रोंज माने यूज ऑफ ब्रोंज से माने जानिथिले खेत्री कपर माइन तो राजस्थान रे अछि समस्त जानिछे जोथि टीन है ना टीन वाज पॉसिबली ब्रॉट फ्रॉम द अफगानिस्तान रो आसुथिला अफगानिस्तान राजस्थान रे माइंस अछि सेथरु से माने आमे कहबा जो मेटल्स वो एक्सट्रैक्ट करथिले टेक्सटाइल्स यूज करथिले ऑब्वियसली आमे कहबा कारण कॉटन थिला बोट मेकिंग करि परथिले से माने बेड मेकिंग करूथिले सील मेकिंग करूथिले टेराकोटा मैन्युफैक्चर करथिले ज्वेलरी थिला जेमति कि लाइक सिल्वर गोल्ड प्रेशियस स्टोन्स जेमति कि हमें क्वार्ट्ज कथा नै जिबा ये सब से माने करथिले that means precious stone वगैरह भी सामने यूज करूथिले here you can see some of the specimens of the art and craft how they looks like here you can see they look like here is these are the terracottas ये देखियो तमे terracottas ये सब जेमति ये गोटे गॉडेस एठी व्हील देखि परिबो this is the dancing girl जहा कथा हम पढुतले ये ब्रोंज these are the bronze ये तम dancing girl bronze these are the what ornaments ये सब ornaments है ना ये टेराकोटा फिगर्स these are the figures ये रहला तमर द प्रीस्ट जाकू द प्रीस्ट बोली कहा जाय ये तमरो ब्रोंज एटा ब्रोंज रु तयारी छी this is also this beard man also bronze then institutions जति हम institutions कथा देखबा पर्टिकुलरली institution कोले केमती विलेज और एडमिनिस्ट्रेशन कोन थिला ताको टाइम रे so very few written materials have been discovered in this Indus Valley and the scholars have not been able to decipher the Indus script so far so जो ताको आजि पंत जो जो स्क्रिप्ट गुडा मिली छि दे आर साधारणतः पिक्टोरिकल फॉर्म रे छि पिक्चर फॉर्म रे तो ताको डेसिफर करिबा बहुत डिफिकल्ट ताको जानि परिबा मतलब ताको पढी परिबा दिस इज डिफिकल्ट आजि पंत त हेइ पनि अदरवाइज हम ताको लैंग्वेज ता बुझी परथन्ते नो टेंपल सेतेबेले किछि टेंपल्स नथला एटा मन रखिबो कौन सी टेंपल मिले नहीं हाँ आम जे देखिबा से माने हरप्पान्स वर रूल्ड बाय द मर्चेंट क्लास ध्यान से देखो कि माने अपर क्लास थिले जेमन ऊपर अधिक मनी थिला देन आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड्स नो इमीडिएट आंसर टू व्हाट तो सेंटर ऑफ पावर को माने पावर रखिथिले सेटा हमको जाना पड़िबनी सो बिलीव करा जाय कि मर्चेंट्स माने को पाके पावर थिला Some archaeologists are also opinion the Harappan cities had no rulers के ruler नथले democratic system थिला equal status थिला समस्तंकर another theory argued that there were no single ruler but a number of rulers थिले representing the urban center so प्रत्येक center गोटे गोटे रूल माने थिले decentralized way रे थिला it was not the centralized institution किछि नथिला बिलीव करा जाय तो ये debatable questions बा सिंपल तुमको decentralized way रे रूल होतला रिलीजन कोन थिला नंबर ऑफ टेराकोटा फिगर जो देखा जाय ऑफ वुमेन वगैरह जहां भी होची सेटा को बिलीव करा जाय वुमेन मान को हमें गॉडेसेस कहले है ना सो अर्थ एज द फर्टिलिटी गॉडेस जदि हम केबा अर्थ को कहा गेला और शिफ्ट हर सम मैनर एज द इजिप्शियंस और शिफ्ट द नाइल गॉडेस है ना दाको आइसिस काउंटी नाइल गॉडेस को द मेल डेटी में केबा ऑन द सील विद द 300 हेड्स 300 heads तुमको योगी पोस्चर दिखा दिबो हियर आई विल शो यू एठी तुम देखिबो एटा तीनटा हॉर्न अछि ये स्टैच्यू रो ऊपर तीनटा हॉर्न अछि आको मदर ये देखो बियर्ड एंड ये मदर गॉडेस ये होची हमर मदर गॉडेस बोली पूजा करंती है ना ये हॉर्न देखि परि ऊपर केमती अछि तो ए मान को एमती पूजा करूथले से माने सो द गॉड सराउंडेड बाय एन एलिफेंट जदि हम देखिबा ए टाइगर रिनो जो पशुपति महादेव मु देखेबी हियर इज द मदर गॉडेस तुम देखि परिबो द बुल देखि परिबो है ना ये जो पशुपति महादेव आंको साइड देखो हियर इज द एलिफेंट लाइक ये रिनो तुमको देखा जो टाइगर्स देखा जाउची हियर इज सम एंटीलोप्स ये सब देखाउची द पशुपति महादेव चारि पट रहिची है ना ये मदर गॉडेस जोटा कि फैन शेप रो रहिची तांकर हेड रे ऑर्नामेंट्स उडाउची मदर गॉडेस ये रहला पशुपति महादेव आ ये तमरो बुल भी सेतले बहुत यूज कराउतला तो एठी तुमको पचरबो कोन ना पशुपति महादेव चारिपटे कोन अछि एलिफेंट अछि टाइगर अछि रिनो अछि बफालो अछि ये चारिपटे रहिछि
पशुपति महादेव जोटा कि सिटिंग पोर्शन रो अछि योगी पोर्शन रे से बसचंदी योगी हियर यू कैन रिटन you can see like yogi posture रे से बसचंदी तांको चारिपटे घेरि के रहिछि elephant tiger rhino and buffalo number of symbols हमको मिले that is the phallus and the male sex organ as well made of the stone have been found. Then people of Indus region also worshipped करथले trees and animals. तो एठी पई एई वर्ष दो तमरो एसे रे पचारथला कि कंजर्वेशन मेथड कि को पॉलिसी एसे रे गोटे आसला कि हमरो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन तो हम एठू लिखि परिबा कि these peoples also they were also doing the conservation of the nature by worshipping the trees and animals. They knew that also they were also aware of the conservation of the nature. Rhino was there, importance थिला, bull थिला, humped और जदि हम क्या bull गुड़ा भी importance थिला, amulets कोले जो हमारो साधारणतः जो पिंधंती ornaments जाको हम कहबा unicorn भी देखिए तमे unicorn these are the important decline of the Indus Valley civilization. By 1800 हम देखिबा 1800 to 1500 टाइम रे ए टाइम रे एक्चुअल रीजन हमको जाना नहीं कोन पाई इंडस वैली रिवलेशन खत्म हे गेला किछि हाइपोथेसिस होची किछि लोक कहंती बिकॉज ऑफ द आर्यंस माने असले दे इन्वेडेड दिस सिटी एंड दे पाउंडेड दिस सिटी को पूरा खत्म कर देले बोली कहा जाय है ना कहा जाय कि आर्यंस माने असला सेंट्रल एशिया रो इन दिस पर्टिकुलर रीजन आई विल शो हियर इन द मैप. It is believed कि आर्यन from this particular region जदि हम ए रीजन रो आर्यन आसले जाको हम सेंट्रल एशिया भी कहू छे तो ये जो सेंट्रल एशिया रो कहा जाय कि ए रीजन रो एटी जो स्टेपी ग्रासलैंड अछि एठो आर्यंस माने आसले एंड आको खत्म कर देले बोली बिलीव करा जाय. दैट इज वन हाइपोथेसिस बामे सेटे को बिलीव करा जाय कि सेटा हेइ थई पारे. द सेकंड बहुत सारा लोक बहुत सारा दैछन रीजन दैछन कि कहंती नेचुरल फैक्टर जेमती कि नेचुरल फैक्टर होची हमरो क्लाइमेट चेंज हे गेला फ्लड आसी गेला तो अर्थक्वेक हे गेला कहंती कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज बहुत किछि आसी गेला ता द्वारा भी रेनफॉल पैटर्न चेंज हे गेला एंती बहुत सारा लोक बहुत सारा कथा कहंती कि रेनफॉल चेंज होले लोक मन को एग्रीकल्चर हेला नहीं सो पीपल्स वर फेसिंग प्रॉब्लम सो दे वर डाइंग और दे लेफ्ट दैट प्लेस है ना. सो दिस ऑल वेयर द किसी लोगों को फ्लड आसीगला इंडस रे डेवास्टेटेड फ्लड्स ता तरह भी खत्म हेगला. सो दिस इज ऑल अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना. नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू लाइक दिस.